आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूँ मीनाक्षी कश्यप। आज गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि ब्लू स्टार नए प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड ने आगामी गर्मी के सीज़न के लिए कमर्शियल रेफ्रिजरेशंस प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विभिन्न रेफ्रिजरेशंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। कंपनी ने अपने कमर्शियल रेफ्रिजरेशंस व्यवसाय का विस्तार करने और देश में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने की योजना बनाई है। With regard to the schemes for the consumer, yes, as far as both Both? Okay. जिसमें आप कंफर्टेबल हो। I'm more comfortable with English, but I can be a little पहले bit. प्लीज Okay. सर अपना So नाम। my name is Girish Ingorani. I did product management and marketing for room air conditioners and the commercial refrigeration business. I also look after corporate communications for the company, and we are here today to launch a comprehensive range of commercial refrigeration solutions to meet diverse applications and every customer need. On offer today is a range of equipment starting from deep freezers, which are hard top deep freezers and glass top for better visibility. Today the focus is not only on refrigeration but also visibility. जो दिखता है वो बिकता है, और अगर जब कंज्यूमर्स आते हैं दाल या चावल लेने के लिए और आइसक्रीम लेके खरीद के जाते हैं, दैट इज़ मेनली बिकॉज विजिबल है। तो विजिबिलिटी पे बहुत फोकस है आजकल। तो डीप फ्रीजर सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है जहाँ मार्केट लीडर्स हैं। उसके अलावा वाटर कूलर्स हैं जो हम 1940 से बेच रहे हैं, और वाटर कूलर्स इज अ सेगमेंट दैट वी बीन लीडर्स ऑन फॉर द लास्ट 7 to 8 decades now. And जैसे कि how does Blue Star plan to capture market share in commercial refrigeration segment? so we are expanding our entire range of commercial refrigeration. We've launched new products, new capacities. We are handling all price points possible. There are many new applications जैसे bottle cooler हमने बताया, which are for pull down of beverages. So deep freezer को bottle cooler में convert किया, all of that. Any upcoming R&D and sensitive technology initiatives? There is a lot of R&D initiatives that go on because two things, as Mr. Tyagarajan mentioned also earlier, eco-friendly refrigerants are very important. So the focus is on sustainability, on energy efficiency. This is a product which runs 24/7. Unlike an AC which you switch on or switch off only for a few hours in the night. So 24/7 application, and therefore energy efficiency also becomes important. So all our R&D efforts are based on that. And also we understand a lot of consumer feedback. Like for example, our busy cooler used to have a door which opens but it doesn't close on its own. So sometimes people just leave it open and go. The retailer doesn't realize and the coolness goes. So it's self-closing. You open it, it'll close on its own. So things like that. Just an example. How do these products differ from exciting commercial refrigeration in the market? How are they different from the others? Yes. So primarily our focus is on the quality, reliability and high performance cooling. In an air conditioner, for example, if the AC fails, there's only discomfort for a few hours. But here there's a lot of losses of the ice creams and all the perishables there. So which is why we ensure we focus all our efforts are on quality, reliability and durability in this segment. Thank you. Any other future plans? The future plans is to continue to expand, continue to grow in this segment, see what other markets are emerging, what other applications are emerging, and have solutions for that. क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हमारे व्यूअर्स को प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। हाँ, तो जो नया प्रोडक्ट्स हमने अभी लॉन्च किए हैं वो हर नीड के लिए हैंडल कर सकते हैं। जो आइसक्रीम रिटेलर्स हैं, यू कैन बेफिक्र आप आइसक्रीम्स तो बेचिए 47 डिग्री पे भी हमारी आइसक्रीम कूल रहेगी, कभी मेल्ट नहीं होगी।